हजारों जी। तरीकों से समझ सकते हैं हम बॉडी को, मगर नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पता नहीं क्या क्या एक ग्रीको रोमन वर्ड हमको सिखा दिया गया है, हमको लगता है वही कुछ है। आज तक तो ठीक नहीं किया किसी ने। तो आप देखिए, जब न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी, उसके पहले तो ग्रेविटी था नहीं ना, सब लटकते थे। आपको मालूम है ना, न्यूटन से पहले ग्रेविटी नहीं था, सब हवा में लटकते थे। ये अंग्रेजों की प्रॉब्लम है, ये गोरों की प्रॉब्लम है। वो ना, वो इकलौते प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। इतने बेवकूफ प्रजाति आज तक हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में पैदा ही नहीं। तो न्यूटन ने जब डिस्कवर किया ग्रेविटी, सेब गिरा, तो उससे किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि पेड़ ऊपर क्यों उग रहा है, वाई द ट्री इज ग्रोइंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी, why the bird fly against gravity, why your spine grows up against gravity. So there must be some other force also, which is actually acting against gravity, and a bigger force. So in Kumbhak Kalachar, we call this force as Udana Shakti. इसको हम क्या कहते हैं? उदान शक्ति. Have you heard this word उड़ान, उड़ना, to fly? Have you heard this word? उड़ना, उड़ान. It has come from the root udana. So to go against gravity is udana. Now, what you can do, you can collect 33 stones, flat stones, and drill hole in between, and put a rope in between. 33 stones. It becomes your spinal cord, isn't it? आपकी रीढ़ की हड्डी बन गई ना वो. How you can keep all the stones in line and straight? When you pull the rope from above and below, if you pull the whole spinal cord, this is the strength which keeps the spinal cord aligned and vertical. Right? So there are two forces which is required. One I have already explained, Vyana Shakti, which actually integrates the whole structure. The another force which is pulling the whole spinal cord up is Udana Shakti. Now, only if you correct these two, Udana and Vyana, the spinal cord will be aligned and there won't be a disc bulge. Only if the force is weak, the disc will slip over each other and there will be a bulge. If you pull it, it will again get aligned. So to increase that pull factor in the body is required to treat this condition. Management is surgery. What is surgery? It is not a treatment. Please understand, surgery is not a treatment. It's a management, and also surgery is not a part of allopathy. It's a part of Ayurveda. Surgery has been digested by allopathy and they don't even give credit. उन्होंने हजम कर लिया अपने अंदर और क्रेडिट भी नहीं देते. Surgery has never been a part of allopathy. It's a part of Ayurveda. So surgery is always a management. It is not a treatment. Surgery करने से डिस्क को इधर उधर फिक्स करके घुसा देंगे सही जगह पे, मगर उसको कौन सही करेगा? वो जो शक्ति है जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी अलाइन रहती है, उसको कौन ठीक करेगा? उसको आप ही ठीक कर पाएंगे और कोई नहीं ठीक कर पाएगा. तो आपके अंदर अगर वो, इफ यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ उदाना, देन वंस डिस्क बल्जेस हैपन, एक बार तो होगा, दूसरा नहीं होगा क्या? दूसरा भी तो हो जाएगा. एक जगह सर्जरी कराओगे दूसरी जगह हो जाएगा. तो अगर आप वो उदान शक्ति को ठीक करेंगे, it will not happen anywhere else. You will be able to maintain the spinal cord in the right strength, right? So that is what we do. There are certain processes in the program which will actually align the whole spinal cord also, but it will increase the Udana Shakti. There is a Vyana process which is there, Vyana Kriya Kumbhak, embedded in the program in the third part, which is Kumbhak therapy. The Kumbhak therapy has three further parts. The third part is Vyana Kriya Kumbhak. It is there. The Udana factor, how to increase the Udana factor, it is there in the program. So it is a holistic kind of a program which will address a lot of things. And that's how it should be. So is surgery required? If there is very necessity, too much necessity, very urgency, then you can, somebody can go for surgery. That's okay. But at least the person must be treated for
what has become weak in the body. ये करना जरूरी है. कई केसेस ऐसे आप देखेंगे, we have certain specialized method where if there is, it's not too much of a problem, then it gets adjusted automatically. People don't even need surgery. उनको सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. कई लोग ऐसे भी होंगे, बहुत जरूरी पड़ने पे करवाया जा सकता है, बट अगेन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम one must work upon the body, and this is the program for working upon the body.